I have seen the glory, the most pioneering university. Probably we could never create that now. What happened, what was built more than 2000 years back. And so happy. सभी अनुभवों से बना मेरा जीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के नए शो में, जिसका नाम है स्वानुभव, जहां हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से जो जीते एक नॉर्मल लाइफ है, लेकिन कुछ तो हटके है, कुछ तो डिफरेंट है और जीवन का स्टाइल कुछ अलग होता है। तो आज हमारे बीच हैं दो ऐसे पर्सनालिटीज जो चलाते हैं एक यूनिवर्सिटी। ये कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे नॉर्मल कोर्सेज करियर वाले नहीं हैं, लेकिन लाइफ के कोर्सेज हैं। मेडिकल साइंस नहीं, स्पिरिचुअल साइंस। तो आज हमारे बीच है डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी, जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका स्वानुभव। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वानुभव शो में। इट इज़ एन ऑनर पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आप आए हैं और ये शेयरिंग लाइफ टाइम्स के लिए आई थिंक वेटिंग था, एंड वी आर हैविंग इट। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि आप इतना प्रचार कर रहे हैं ध्यान की, आपकी मेडिकल साइंस बैकग्राउंड होते हुए आपने वो छोड़कर जो स्पिरिचुअल साइंस में आपकी जो यात्रा शुरू हुई थी एज अ मेडिकल डॉक्टर, कैसे आपने अपनी ध्यान की शुरुआत की थी? मैं भाग्यवान हूँ, fortunate that we are here in PMC Hindi studio, and my deep reverence, respects, gratitude to Brahmarshi Pitamaha Patriji, who sown the seed of meditation and spiritual science and wisdom in me, and also inspired so many people in India and across the globe. Forever grateful to Brahmarshi Pitamaha Patriji. And as a medical doctor, why I came into this path? Because many think that I'm crazy, lost my mind. But that's what initially even my family thought about it. And even my medical fraternity believed that why this fellow, my friends, almost like deserted me. Like they thought I was crazy, and reading spiritual books, meditating, and going to Patriji's discourses and Sajjan Sangacha, and all that. They used to mock at me, tease me, and but I know the value of this because I have got the experience of what is called as meditation and what meditation can do to any human being. It transforms fundamentally anyone. And Patriji told only one thing to me, that you seek the answers not outside of you. Seek within yourself. Meditate. You will find all the answers. That is the bharosa he has given to me. That is what he told me. Don't leave this practice. तो आपको एक टूल दे दिया उन्होंने। Yes. तो आपने एज अ स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट थे आप, Yeah. ऐसा कोई था नहीं आपके आसपास जो एक इंस्पिरेशन रहे मेडिटेशन करने के लिए? Yeah. आप अकेले, वो कैसे इग्निशन आया आपके अंदर कि मुझे एक्सप्लोर करना है और जानना है? The interest came because my life was a mess at that time. Everyone want to be happy in life. Doesn't want to suffer. So even I want to be in a dukkarahicha state. I want to cease my suffering. And
in that pursuit, I was meditating. I क्या had क्या आपने एक्सप्लोर क्या किया? जैसे मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है, yes, लेकिन आपने साधना जो है, okay, कैसे आपने क्या क्या चीज़ें आपके अंदर मिथ्स ब्रेक होने लगी ध्यान के बारे में, अपने बारे में? right. So from the very beginning in the childhood, I never was a believer of God. I was born in a atheist family, Okay. non-believer. My father given me this name because he wanted me to be a scientist. That's my first question actually. न्यूटन कैसे? Yeah, Newton is because my father had a dream about me. He wanted me to be a scientist and as great as Isaac Newton. Okay. Okay, so and this name actually made me also always to have that scientific temperament. I used to question, and even about worship and about any festival in India that we celebrate. I never used to be like going to the temples. लॉर्ड And ऑफ यूथ आपसे ज़रूर कनेक्ट होंगे. so I was coming from that background. So even meditation, I am not a believer of meditation at that point of time. But Patriji, the way he received, the way he extended his hand, shaken hand with me, given his friendship, and with such compassion he was speaking, it touched me. I felt I found a friend more than a guru. And like a friend, he started telling me, insisting me to practice every day. And he told that you don't need to be blindly follow whatever I say. You experiment, he said. If you like it, after 40 days, you continue the practice. But you will find your answers. That guarantee I give you. Whatever questions that you have, you will find the answers. So I want to find the answers for this life. What is the meaning of my life? What is the purpose of this life? And the second is, who am I? I know this body goes away and constantly we change. Every change is a very big blow to me because I resist change. But there is change here. So he asked me to find out what is that unchanging principle within you. That part of you which never changes. You have to find that entity within you, the soul within you. That happens in meditation. Theoretical knowledge will not help you. That's what he said. So that's why I'm very consistent, regular with this practice. And initially I want to even give up meditation because my mind, monkey mind, was not allowing me to meditate. So many crazy thoughts, millions of thoughts were coming in my mind. So, but 40 days practice, he said every day 3 hours meditation, anapanasati meditation, watching the breath. So I was sincere to that practice. After 25 days, slowly there were signs that my mind was a little bit tranquil. There were silent spaces in the mind. And 40th day, completely I experienced that zero thought, zero mind state. At that point of time, I had seen one big eye, third eye. I can say now that it's a third eye. It's a big eye. And through that, I was seeing nature, which I have never seen, the colors, the beauty. And it's so beautiful. And I had the questions. So I was in a thoughtless state of mind. Then my mind is not imagining things. How could I see? So these were the questions at that time. So every time my experience used to generate some questions. Again, questions used to be answered with some other experiences. It's like this program that you are interviewing as Swanubhav. You know, this is my Swanubhav. That I could see what is not possible to see with my physical eyes. My mind was not imagining. My mind was utterly empty. There are no ripple of thoughts in the mind. Then I want to investigate about it. So later on, so many other experiences unfolded. Like one thing is my past lives. Very second series of experiences
that I had was I started seeing myself as clean shaven head and Buddhist robes, Buddhist monk life. And I was walking always with many other monks. We were in a kind of a setting where I was on a pedestal, where all the other monks were seated down. I was teaching about reincarnational law of karma. And I recognize a smriti, or the memory that came to me, that it's a past life memory, almost more than 1500 years back. It's an ancient Takshashila University. So these are the, experiences initially which made me to be more interested about meditation. Meditation is not just passive, just silent and still state experience, but it is a very active, very dynamic and experiential, very experiential, and which makes us know many things about our own self. So slowly, many experiences started coming to me. This was my beginning. Wow. So being a medical doctor on one hand, आप दूसरे साइड पर अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को एक्सप्लोर कर रहे थे. That's wonderful. और वो भी ये नहीं है कि आसपास में बहुत लोग हैं जो मेडिटेटर्स हैं, आप खुद अकेले बैठे हुए साधना कर रहे हैं. सो दैट्स ब्यूटिफुल. सो मैम, आप भी एक मेडिकल डॉक्टर हैं और आप हैदराबाद की रहने वाली थी और आप करनूल चले गए पढ़ाई के लिए, अपने MBBS के लिए. तो आपकी ध्यान की यात्रा कैसे शुरू हुई? और क्योंकि आप बहुत कंपैशनेट, बहुत ही आर्डेंट, क्या बोल सकते हैं, एक बिलीवर हैं ऑफ कंपैशन. सो हाउ डू यू, व्हाई डिड दिस कम? क्यों आप ऐसे अलग पाथ में आए? वंडरफुल क्वेश्चन अमूल्या. सो इस जन्म में मेरा जो आध्यात्मिक प्रयाण है वो मैं जब लगभग 30 साल की थी सब तब शुरू हुआ. एक बार मेरी माताजी ने मुझे एक मंदिर लेके गई और वहाँ कुछ मेला चल रहा था. जब वहाँ पे गई मैं अपनी माँ के साथ, जो भी हो रहा था वहाँ पे वो देखकर मुझे बहुत हैरान हो गया. मैं वहाँ पे जो माता की जो मंदिर है, उस मंदिर में सब जानवरों को वो बलि दे रहे थे. वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो जानवर जो पीड़ा अनुभव कर रहे थे वो पीड़ा मैं अनुभव कर रही थी. तो वहाँ से आने के बाद मैं अपनी माता को, पिता को बोलने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए. हम सबको उन्हें प्यार करना चाहिए, प्यार देना चाहिए. ये जो हो रहा है वो गलत है. ऐसी बात कहने लगी मैं. तो मेरे माँ बाप तो बहुत शॉक हो गए, ये क्या कह रही है लड़की. they started laughing at me and they told, तुम्हें तो एक ब्राह्मण के वंश में पैदा होना था, यहाँ पैदा हो गए तू, ऐसे बात नहीं करना चाहिए. बहुत नेचुरल है, नेचुरल है. और मेरे अंदर ये प्रश्न भी उठ गए कि अगर एक माता, क्योंकि वो तो माँ का मंदिर है, भगवती का मंदिर है, तो एक माता कभी भी अपने बच्चों का बलि नहीं मांगती, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं. तो ये ऑल दिस क्वेश्चन स्टार्टेड इनसाइड मी. एंड अंदर से मुझे पता था कि ये तो गलत है, ये गलत बात है. तो आफ्टर फ्यू डेज और मे बी आफ्टर फ्यू वीक्स, फर्स्ट टाइम, पहली बार हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है वो मुझे नॉनवेज खिलाने के लिए प्रयत्न करे. लेकिन मैं आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड एंड आई टोल्ड देम नो, मैं ये नहीं खाऊंगी. एक इंसिडेंट ने बस एक इंसिडेंट. एंड जब वो लोग बोले नहीं ये खाना है तभी आप तंदुरुस्त बनोगे, वो बनोगे, ये बनोगे, मैंने बोला अगर ये जो आहार है, ये जो फूड है आपको तंदुरुस्ती देगी तो ये ले लीजिए, मेरा उंगली है ना, ये काट के आप खा लीजिए. अगर आपको इतना अच्छा लगता है ये जो खाना है तो मेरा जो उंगली है आप काट के आप खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा आपको.
तो बहुत दे ऑल वर रियली शॉक्ड. एंड उसके बाद कोई भी मुझे नॉन वेज खिलाने की प्रयत्न नहीं बोल्ड करे. स्टेटमेंट आपने किया डायरेक्टली फैमिली को, जो सबकी बात सुनने वाली है अब. राइट. वाओ, सो मच स्ट्रेंथ. यस. Just many take times incident. many times मुझे ऐसा लगता है कि ये इस लाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मेरा जो पास्ट लाइफ है, पिछली जन्म है, उस जन्म से मैं ये जो ज्ञान या अंडरस्टैंडिंग या अवगाहन मैं वहाँ से लाई हूँ. और छोटी उम्र से ही मैं जो भी है वो जागरूकता से मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो जी रही थी. तो यही जैसे एक इंसिडेंट ने आपको कंपैशनेट बनाया, ये कंपैशन से स्पिरिचुअलिटी का जो यात्रा है, अपने आप एक है बाहर जो हो रहा है उसको रोकना, खाने का जो चॉइस है उसको चेंज करना, एक है जो अंदर का प्रयाण है जहाँ पे आप मुंह बंद, आंखें बंद, आपके सेंसेस को बंद करके आप अंदर जा रहे हैं. तो ये कैसे हुआ आपके साथ? उसके बाद जो भी हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी, जो भी मैं मानती हूँ, जो भी मैं बिलीव करती हूँ वो तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. लेकिन मैंने जो भी मेरे फैमिली के साथ कहा वो लोग माने मेरे बात को. आई फील इट्स अ मिरेकल. आई फील दैट्स अमेजिंग व्हाट दे कुड अंडरस्टैंड. जो भी मैं कह रही थी वो समझने लगे और सब लोग मेरे फैमिली में वेजिटेरियंस बन गए, शाकाहारी बन गए. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. और उसके बाद मैं जब 10 साल की थी, एक बार मेरे पिताजी ने एक बुक लाए घर पे, ब्लिस डिवाइन, स्वामी शिवानंदा का बुक है. इतना बड़ा बुक है. और उसके ऊपर कवर पेज पर जो भी लिखा हुआ था, इट जस्ट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मी. उस कवर पेज पे लिखा हुआ था, खाना पीना सोना मरना यही है क्या जीवन? इसके अलावा कुछ और है? मैं भी सोचने लगी, जीवन यही है क्या? अगर जीवन यही है तो हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और मरते हैं. एनिमल्स भी यही करते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है? लाइफ का मीनिंग है क्या है? देयर शुड बी समथिंग, कुछ तो होना चाहिए. तो उस समय पे मैं जब भी मेरे ग्रैंडफादर के पास, नाना जी के पास जाती थी, मेरे नाना जी बहुत मास्टर से मिलते थे, अवधूत. many masters, they used to come home and they used to stay with us. तो उस बचपन के जो दिनों में मुझे उनका सांगत्य मिला और मैं उनको ऑब्जर्व करती थी, उनके पास जाके खेलती थी. और वो जो ध्यान का जो अनुभव है ना, वो अनुभव करती थी उनके साथ. और ऐसे मास्टर से मिलती थी. एक मास्टर तो जल के अंदर, पानी के अंदर जाते थे और 6 महीने जल के अंदर वो ध्यान करते थे. तो बचपन में ऐसे महान व्यक्तियों के साथ मुलाकात हुआ. तो उसी समय पे वो जो ध्यान का, आध्यात्मिकता का सीड्स है ना, दे वर जस्ट सोन इनटू माय कॉन्शियसनेस. और उसके बाद जो अनुभव मैं अनुभव करती थी बिना ध्यान, नोबडी टोल्ड मी ध्यान क्या है, कैसे करना है. मैं हर दिन वही अनुभव करती थी बिना जानकारी के. तो उस समय के बाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर न्यूटन से मिली और हम दोनों इतना शेयर करते थे. वी वर द ओनली फ्रेंड्स, क्योंकि सारे क्लासमेट्स को इसका लगाव नहीं था. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस सब्जेक्ट्स. और वो लोग ऐसे सोचते थे ये दोनों क्रेजी हो गए, पागल है. एक्चुअली दैट्स ट्रू. एक्चुअली अगर मेडिकल पढ़ाई में इतना सारा करना होता है, यू लेफ्ट ऑल ऑफ दैट एंड यू आर गोइंग टू अंतर यात्रा. कौन देखता है अंतर यात्रा वहाँ? सो यू फाउंड ईच अदर. यस, वी फाउंड ईच अदर. सो आप ऑलरेडी ध्यान में थे, मैम जुड़ी तो आप भी साथ में इस यात्रा को डिस्कस करते. Yes, actually we used to share so many experiences. And Dr. Lakshmi used to share about some of her out-of-body experiences. One thing
which made me to really feel so much surprised is about her astral travel to Shirdi Sai Baba. So at that point of time, 1992, 91, it was not so famous. We used to live in Kurnool because we were students there. So Dr. Lakshmi traveled out of body and went to that place, and there the Samadhi opened and she has darshan of Shirdi Sai Baba that time. And we all, I never knew about that master, and she revealed how that place was looking like, all that. And she used to have those spiritual experiences without meditation, bina meditation. You're not in meditation by then? No, it was natural for me. I didn't even knew that जो भी मैं कर रही हूँ वो ध्यान है. डॉक्टर न्यूटन से मिलने के बाद मुझे पता चला है ये ध्यान है, और ध्यान में ऐसे अनुभव होते हैं. Because I used to ask her. So you would be like, इतना साधना मैं कर रहा हूँ, आपको तो naturally हो रहे हैं. So one time Dr. Lakshmi shared that she had an experience that she was interviewed by 3 masters. The first master is Shirdi Sai Baba. Ramana Maharshi. First Ramana Maharshi. So she was passing through a corridor in meditation. It's like an outer body experience. So, and the first room she entered, there Bhagavan Sri Ramana Maharshi was there. And he was questioning Dr. Lakshmi. So, you are such a young person. There's so much life for you. Why you came into this path? Being a very young person. And Dr. Lakshmi answered that, you are also very young when you came into this path. You skipped your school. Wow. It's so natural for Dr. Lakshmi to counter, question again Bhagavan Sri Ramana Maharshi. And he said, you passed the interview. Now go to the second room. In the second room, there was Sathya Sai Baba. Sri Sathya Sai Baba. So there he also asked a question. So you are a medical doctor. You are training yourself as a medical doctor. And you are now coming into spiritual path. And how do you get money? And because anything that you have dreams, you need money. So she also asked a question. So how did you get money to build such a big organization? आप इतना सब कुछ करते हो, तो क्योंकि आप इस विश्व में प्रेम भरना चाहते हो और आप सभी को सेवा करना सिखाते हो. जब आप सेवा करते हो, ऐसे ही आ जाता है सब कुछ. जो भी चाहिए, जो भी पैसा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो सब आ जाता है. जैसे आपने किया. जैसे आपने किया. मेरे लाइफ में भी ऐसा ही होगा. And Sathya Sai Baba said, you passed this interview, now go to the third room. It was long back, 92. So year 1992. So the third room, Shirdi Sai Baba was there. So he said to Dr. Lakshmi that gave the golden key. Whatever you want, you will get it. You open this, use this key, you will get it. Money, paisa, diamonds, gold, fame, whatever you want in the world, anything you will get. So Dr. Lakshmi said, I don't want all these things. Whatever that, the real treasure, the moksha, the enlightenment, Brahmagnan, I want that, which liberates me from the cycles of birth and death. He's so pleased, and Dr. Lakshmi shared that Shirdi Baba hugged her and said, yeah, you're on the right track. You passed the interview. So I used to keep hearing these experiences from Dr. Lakshmi. I used to wonder, wow, without meditation, she had these experiences. I have done so much sadhana. So we used to always share our experiences together. I used to be a meditator. I used to do Anapanasati meditation as instructed by Brahmashi Patriji. Whereas Dr. Lakshmi, she was self-guided. I feel that
Dr. Lakshmi is born as a meditator. She never learned it in this life. You never did anything. No. Oh. Actually, what I saw in one of her past lives is she was a kind of a master in the Himalayas, a lady master who was having a big ashram where she was teaching. Actually, she was teaching about spiritual path. So when I met Patriji and Dr. Lakshmi, I used to feel that I found two gurus. Even I consider Dr. Lakshmi as my guru, because she used to always make me to go within, because she used to always ask me that what you are learning through your experiences, are you applying it in daily life? So that question made me to even go further ahead in the spiritual path, because we may realize certain things in meditation, but we may not apply it in daily life. But that's so important. Unless the wisdom is practiced on daily basis, it is not going to give result into fruition, or the what is called as the fulfillment will not be there. It will not be called as wisdom. It's still in the level of knowledge. ध्यान में तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ध्यान के अलावा अगर आपको सीखना है तो जीवन से आप सब कुछ सीख सकते हैं. आपका जो संबंध बांधव्य है उससे सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं आप. मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट मेडिटेशनल एक्सपीरियंस. एक दिन मैं घर के बाहर खड़े होकर ऐसे देख रही थी, तो एक भिखारी उनका पाँव नहीं था, हाथ है और एक स्टूल है, उससे बैठकर उसके ऊपर बैठकर वो ऐसा करते हुए पुश करते हुए जा रहा था. और उस समय पे हमारा जो घर है उस ऑपोजिट अपार्टमेंट में एक डॉग हैज़ गिवन बर्थ टू 3 पपीज. तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले जो डॉग है उनको लाया, लेकिन जब ये she has given birth to those 3 puppies, she started barking at the children in the apartment. So उन्होंने बाहर छोड़ दिया ये लोग. और वो जो अभी वो पैदा हुआ था, वो क्यूट पपीज, वो 3 पपी को वो उन्होंने बाहर फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया. और 2-3 पपी वहाँ पे एक गेट था, वहाँ पे अटक गए. एंड दे वर क्राइंग. एंड दिस बेगर, ये जो भिखारी है, वो वहाँ पे जाकर उस 3 पपी को बाहर लेकर उनके पास जो खाना था वो दे रहा था. सच ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अनकंडीशनल लव इज. यही है अनकंडीशनल लव. तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जब उन्होंने उनको देखा, उनके अंदर से इतना प्यार है, उसके हृदय में इतना प्यार है, so much love. That day I understood. You don't need to have anything. मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फिर मैं कुछ करूँगा संसार के लिए, दूसरों के लिए. कुछ भी नहीं चाहिए. अगर आपके अंदर प्यार है तो आपका एक मुस्कुराहट किसी और का पीड़ा से वो बाहर आ सकते हैं. That was such a wonderful lesson for me. Just observing that beggar. वो भिखारी मेरा गुरु बन गया. और तुरंत मैं जाके वो 3 पपियों को मैं घर लाई. और उसके बाद उनकी माँ भी आ गई. और those wonderful beings, I call them angels. वो angels है. कितना प्यार लाया हमारे जीवन में, और ऐसे ऐसे lessons हम उनसे सीखे. So, आप खुद अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे
प्रैक्टिकली आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे, और क्योंकि आप पत्रिजी के साथ जुड़े हुए थे तो किताबें पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, एक्सपेरिमेंट करना, मैंने बहुत सुना है आपके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. जब जब जो चीज़ सर बताते थे आप इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर सर के पास जाते थे. तो ये पूरे रास्ते में जैसे आपका मेडिकल, आप अपने पढ़ाई कर ही रहे थे, तो जब ख़त्म हुआ फिर किस पॉइंट पर आपने डिसाइड किया कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ? क्या तभी आपने छोड़ दिया? Yeah. During that time, even medical exams, we used to just miraculously pass through all the exams. For example, there was exam, ENT examination, ear, nose, throat. So I have not really studied well. Not studied, almost like. Only thing is, I meditated, and just before one day, I slept after meditation. In the dream, I have got the question paper, 2 essay questions and short notes, whatever going to appear. And one spiritual guide was leaking the question paper to me. So when I went, I prepared for 2 hours for the exam. I had the distinction marks in that exam. So at every step in medical school, it was always passing. All the gates of success is open for me. I never or failed in any exam. And after meditation, I developed a photographic memory. Whatever I used to read about anatomy, physiology, all that, whatever medical textbooks, everything goes, one reading itself, I used to remember everything. It used to be recorded in my mind. जो भी हुआ डॉक्टर न्यूटन के साथ, ऐसा नहीं है कि हर विद्यार्थी ऐसा करना चाहिए. Because सभी लोग अब सोचेंगे फोटोग्राफी नहीं. Yeah, the photographic memory is वो तो okay. वो तो ठीक है, लेकिन But, getting the question paper Without मेरे साथ studying. भी यही हुआ है. 10th स्टैंडर्ड में मैंने भी अपने पेपर देखे थे, बट दैट्स नॉट द Yes. ओनली वे. Yeah. Because he was इतना मेडिटेशन करते थे वो, so the masters wanted to help him. That's it, in the physical plane. And after completion of medicine, our medical studies, I felt that this is not my path. This is not what I want to do. आपने एमडी भी किया है? I did my MD. Okay. So in between there is also a big adventure that Dr. Lakshmi and myself did. So we ran away from home, eloped, and got married. And 1 year, nobody knows about whereabouts of us. And we reached, with no money, we reached to Kerela. From Andhra to Kerala we went, and we lived there. Just meditation and whatever. Sometimes I was so fascinated about studying books, spiritual books. Even whatever that, I worked for 1 year as a RMO, resident medical officer. So 1 year I worked. So in that, I used to get around 2,000 rupees salary. That in 1993. So that money, one time I request Dr. Lakshmi that I want to buy with this 2,000 rupees Dhammapada, Buddha's literature. So Dr. Lakshmi said, okay, buy. And I invested all that money and bought those books. And, Just like Patriji. And no money for food, actually. That month, only we survived alternate day. We used to prepare some idli and eat with bare minimum food. But we were so extremely happy. We thought, money will not give us happiness. Actually, we used to sleep on the floor. No cot, no bed. We used to sleep on the floor. And with very least amenities. But we were so happy. And we decided that 1 year is like apprenticeship, like a training. Sadhana samay. And after that, I did my MD. I know this is what is complete now, exit from the medical science field, because spiritual science is waiting for me. And I felt like that was a calling for me. And we decided that time. I told Dr. Lakshmi that this is the path.
that we choose. We need to travel around the globe. We didn't have money to go around the world, but I have the sankalpa, the intent to spread this wisdom, whatever that we gained through meditation practice, experiences, wisdom, all that we want to share it with everyone. So we could travel to 100 plus countries around the globe, and from that time is no turning back. Yeah. वो जो 1 साल हम केरला में रहे, वो साधना का समय था. जो कुछ भी हमने पुस्तकों में पढ़े या जो भी ज्ञान हमें मिला, it was the time to test us ourselves, and we really tested ourselves, and हमने ये साबित किया कि खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए. अगर आप अंदर से खुशी हो तो खुश हो तो everything is you can enjoy your life. So that was a beautiful time. We always remember that. And उस समय पे we didn't had money, but we met almost many masters. हम इतना travel करते थे, इतने masters से मिलते थे, and that is the best period of our life. Yeah, meeting mystics, masters around the globe, and in India there's so many masters, Himalayan masters, and we used to really ask this question to hear from them their experiences, because Patriji talks about this, like a honeybee collecting honey from all flowers. Every seeker of truth need to collect the honey of wisdom from every master, everyone. So that was such an inspiration. So we used to all the time go around wherever there are some enlightened beings. We used to seek their company and just ask the questions to receive. Yes, it's not that हम ये youngsters को ये message दे रहे हैं कि Dr. Newton said we eloped. So that's not the message. The message that we want to give to all the youngsters is follow your heart. Because हम ऐसे जीना चाहते हैं कि जो भी मेरे माँ बाप ने कहा मैं वो किया, जो भी किसी ने कहा मैं इसीलिए वो किया, ये किया, लेकिन आखिर हमारे जीवन में हम ऐसे फील करते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, मेरे अंदर खुशी नहीं है, मैं जो कुछ भी करना चाहती थी मैं वो नहीं कर पाया. सो ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं. तो इसीलिए आपको क्या चाहिए? Most of the time we don't know, especially the youngsters. Yes. They don't know because they are so confused. Because there is difference between listening to your mind and listening to your heart. और हमें वो पता भी नहीं है हार्ट का क्या है, माइंड का क्या है, तो बहुत कंफ्यूजन है. तो फॉलो योर हार्ट, और जो भी निर्णय आप लेते हो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. Dr. Newton and myself, we never regretted in our life all the choices we made in our life. हम इतने खुश है. जो भी निर्णय हम हमारे लाइफ में लिया, वो निर्णय हमें एक ऐसा पथ तक लेके गए, so that we could live a purposeful life. And हर एक also, को ऐसा जीना चाहिए. yeah, from the medical science to spiritual science, it's a big shift, because our life, the whole fulfillment we felt with spirituality, spiritual science, because Adhyatmika Shastra, that's what is our passion, and that's what is the driving force for us. We don't want to blindly believe any spiritual path, but to be a spiritual scientist, This is what I heard from Patriji. तो आपको कठिनाइयाँ नहीं महसूस होते? क्योंकि अगर आप देखो कि स्पिरिचुअल साइंस में उस समय में स्पिरिचुअल साइंस को प्रमोट करने वाला कोई भी नहीं था. बहुत अगर बोले तो वेस्टर्नर्स में लोग ज़रूर थे, लेकिन हमने इंडिया में अगर देखे तो बहुत कम. अगर हम बोले तो हिमालय के पर्वतों में जाके आपको कोई गुरु मिलेगा, बट आप जैसे नॉर्मल कपड़ों में रहने वाले, जैसे पत्री जी को आपने देखा था, तो क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए
इस स्पिरिचुअल साइंस को, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, Yeah. यू नो, आपको पता है कि लोग कैसा माइंडसेट रहता है, Correct. क्या लोग रेडी नहीं है ये सत्य जानने के लिए. तो क्या क्या आपने जब डॉक्टर न्यूटन एंड माई सेल्फ, जब हमने ये निर्णय लिया कि हम मेडिकल डॉक्टर्स, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू टू बी द मेडिकल डॉक्टर्स, वी वांट टू डू समथिंग एल्स, बिकॉज दुनिया में तो इतने डॉक्टर्स है सेवा करने के लिए, दवा देने के लिए. तो हमें ऐसा लगा कि हमारा ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़रूरत यही यहाँ पे है जहाँ हम ये आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंस हम दे सकते हैं दुनिया को. तो हमने ये निर्णय लिया कि विल नॉट कंटिन्यू. सो दैट वाज अ बिग चैलेंज. सब लोग ऐसे हमें क्वेश्चन करते थे, मेडिकल सीट पाना इतना मुश्किल है, पैसा कहाँ से आएगा, हाँ पैसा कहाँ से आएगा, क्या हो गया आप दोनों को, what is that you're doing? साइंटिस्ट बनना था. Yeah. Yes. And spiritual science is really, it is the path of this current age, because so far everyone was blindly following, and they have so many doubts whether I'm going on the right path or not. But once we have this experimental nature, for example, meditation itself is an experiment. We are experimenting with our own breath, experimenting with our own consciousness. So 40 days trying and watching the breath and silencing this monkey mind, all that energy that we get, we can experiment with it. Spiritual science is about, conducting an experiment. Then from your own results, from your own experiences, you can draw some conclusions. Not blindly some philosophy, some master ancient teachings, all that. So even I never believed Bhagavad Gita. It's all theory in Bhagavad Gita. For me, I want to really have practical experiences. That is provided by science of meditation practice. So whatever is written in Bhagavad Gita is all absolutely 200% correct. Krishna Paramatma, whatever he told, the teachings that he delivered, and absolutely correct. I came to know through my own experiences. Please share an experience with Okay. Okay. So, Lord Sri Krishna was talking about, many lifetimes to Arjuna. I know all your past lives. I know all my lifetimes. But you do not know any of your past lives. Bahuni me vetitani janmani tavacha Arjuna. He told in the one shloka that we had many lifetimes. I remember all my lifetimes, but you do not know. Remember. Oh Arjuna, become a yogi. That's what he told. So only by becoming a master of your own self, when you open the third eye, then you can see your own past lives. So one of the experiences is with the Lord Sri Krishna, where I had the darshan, because I used to question my own experiences. Whenever I used to get some experience, is it my mind hallucinating? Is it my imagination? So always I used to ask for evidences, some kind of evidence from the masters. Or being from medical science, you always need an answer. Logical, some evidence, some proof. So that day I was in deep meditation. So in Karnool there is a pyramid that was built. It's called Buddha Pyramid Jhana Kendra. First pyramid of peace. Pyramid of peace system. So there on the King's Chamber I was sitting, and in meditation I had the darshan of one yogi. I do not know the name of him. And he was sitting in a cave, and it's like a pyramidal. The shape in which he was sitting is like a pyramidal shape. And huge body, and with hairs, flowing hairs. And I was there with him, waiting when he will be opening the eyes. He didn't open the eyes. I know he is just testing me. I waited and waited. How many minutes, how many hours over, I do not know. I was waiting.
So after a long time later, he opened the eyes, and immediately as he looked into my eyes, I understood, I realized that he is none other than Lord Shri Krishna. So Krishna Paramatma. So immediately he started showing all the connections, like a golden card from him is connected to so many people in the world. And one card is connected to me. I felt immediately that he is my parental soul, like a Purnatma. I felt such deep, like a cable connection with Lord Sri Krishna. Immediate connection, instant connection. I fell in love with this master. And he immediately started shouting, like scolding me. You know, you want to know many answers, but you will be shocked because you wasted so many lifetimes. In the beginning stages, you wasted so many lifetimes for this and that, and you just wasted your lives. This like lifetime, father is telling like a father. He told this lifetime is so important, not to miss the goal. You have a purpose, a divine purpose to fulfill, and don't go away from this path. And he instructed me very clearly about this path, that I have to travel around the globe. All the instructions that he has given. He showed around 80 past lives, like one record he used to show, and 80 past lives. There is no time there. So everything is understood, and everything is like a holographic movie around me. And many countries, particularly mainly India, particularly in Takshashila University lifetime, in Takshashila, and Buddhist lifetimes, many Buddhist lifetimes. So all kinds of lives, some like animal lives, some human, and which are materialistic and indulging lives, some perpetrator lives, but some really spiritual sadhana lifetimes. Last, I think, at least 5-6 lifetimes, I was very going deep into the sadhana. Like in one lifetime, I saw very clearly with Lord Shri Krishna. In Himalayas, in the cave I was meditating. The cave collapsed completely. I was buried under this ice completely, snow. And I lived there for I don't know how much time, but I vacated the body that way. So जब जब वो दिखा रहे थे आपको एक पास्ट लाइफ, क्या आपको समझ में आ रहा था उस Yes. पास्ट लाइफ से क्या सीखना है आपको? it was coming. At that time, I couldn't understand much. But later on, after the experience was over, it took almost a few years to integrate the lessons. What each lifetime contributed to me as a lesson. Because every lifetime, every experience makes us learn some certain things. Without experience, we don't learn at all. So all these experiences made such a huge difference. So integration took almost few years. So this was तो पास्ट लाइफ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, नहीं, सिर्फ एक एम्बिशन नहीं है कि श्री कृष्ण से मिलना, बट जो आप देख रहे हो उसको इंटीग्रेट करना अपने लाइफ में. वेरी correct. इम्पोर्टेंट. Yeah. हर एक चीज़ एक लेसन है. तो बहुत लोगों को पास्ट लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, और ये देखो मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा, देखो मैं क्या हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. बट जो आपने सीखा उससे, अगर सीखा नहीं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं, मूल्य नहीं Yes. है. क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक राजा था, एक रानी थी, सो आवर ईगो जस्ट गेट्स बूस्टेड. बट एक्चुअली द रियल पर्पस ऑफ ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, उससे हमें ऐसा सीख मिलती है कि क्या हम सीख नहीं पाए उस लाइफ में, और उस लाइफ का और इस लाइफ का क्या कनेक्शन है. व्हाट इज़ इट दैट इज़ अनफिनिश्ड, अनफुलफिल्ड. जब हम वो जो लेसन हम नहीं सीख पाए उस जन्म से, इस लाइफ में हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो लेसन सीखने के लिए. तभी आप और नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे. नहीं तो इट रिपीट्स. या आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, बार बार आना ही पड़ेगा. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पास्ट लाइफ. ये जो लाइफ है, ये एक
अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, और हर एक दिन, हर एक क्षण वी आर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी. एंड जिससे भी आप मिलते हो इस लाइफ में, दैट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. किसी को देखकर हम कैसे जीवन जीना है वो सीख सकते हैं. एक ओपननेस डेवलप होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो कि आप हर एक से सीखना है. राइट. और किसी को देखकर कैसे नहीं जीना वो भी हम सीख सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट, दोनों तरफ है. दोनों तरफ. ओपननेस यानी ये नहीं कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लो, जो नहीं करना है वो भी है. वंडरफुल. सो एक्चुअली यहीं से, जैसे आपने कहा कि आपको एक मैसेज आया था कि आपको वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करना है, ये स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड करना है. अब आप कर रहे, ये कार्य कर रहे थे, लेकिन ये सब कार्य करते हुए कैसे एक ऐसे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है जो हम सब देखते हैं, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी. मैं बोल सकती हूँ इट्स द पायनियरिंग यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं जहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस को फंडामेंटल लेवल से लेके एडवांस्ड तक आप सीख सकते हो. ये केवल बुक्स में हजारों, जो पत्री सर ने 2 लाख से अधिक किताब पढ़े उसमें ही नहीं, वो सब इंटीग्रेट करके एक जगह पे आपको मिल सकता है. लेकिन इसका जो इंसेप्शन है, वो जो थॉट है इसके लिए, वो कैसे आया? क्योंकि आप देख ही रहे थे, पास्ट लाइफ देख रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, पर्सनली कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे शुरुआत हुई? Actually, the conceiving the idea of Quantum Life University, it happened after the reincarnation memory that flashed into my third eye, and where I had that experience in the ancient Takshila University. I was working there as a professor. I was an acharya there. So I didn't believe that initially. But that was repeating so many times. Whenever I used to meditate, those clean-shaven heads, Buddhist monks used to appear. I was so much vexed, bored with seeing all these clean-shaven Bodhigundlu, clean-shaven heads. I don't want to see their faces because all the time they are coming. Because that lifetime need to be integrated and understood. It is directly linked with this current life. So I have seen the glory, the most pioneering university. Probably we could never create that now. When you told that quantum life is a pioneering, no, I think that was pioneering university. What happened, what was built more than 2000 years back, it was the most pioneering. And throughout the globe, many students used to come and study there. Across the globe, it attracted so many students. It is spiritual science. So many departments used to be there. So I saw in elaborate that lifetime. I was there. So there is something which is unfinished. I want to bring it back now in this incarnation, in this current times, using scientific entire approach. The spirituality need to be brought. Science and spirituality need to be brought together. That is an effort from Quantum Life University now. This is like a reincarnation of ancient Takshashila University. और हमें ऐसा लगा कि इतने कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद, सब कुछ देखने बाद, ऐसा लगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वी नीड अ फाउंडेशन. और हमारा जो लाइफ है, हमारे लाइफ के लिए फाउंडेशन है आध्यात्मिकता. क्योंकि जो भी स्कूल्स है, जो भी कॉलेजेस है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पे सब कुछ पढ़ाते हैं, मटेरियल साइंसेस पढ़ाते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता शुड बी द फंडामेंटल साइंस, द बेसिक साइंस, द बेसिक फाउंडेशन. बिकॉज अगर हमारा फाउंडेशन, बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम उसके ऊपर जो कुछ भी बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. इसीलिए हमें ऐसा लगा है कि हर एक लड़का या लड़की को इस दुनिया में, उन्हें एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे ये आध्यात्मिकता का फाउंडेशन हो और जीवन जीने की कला उन्हें, वी कैन टीच देम. बिकॉज चिल्ड्रन, दे डोंट नो
उन्हें नहीं पता है जीवन कैसे जीना है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का परमार्थ क्या है। अगर जीवन में कुछ चैलेंजेस आए तो उन्हें कैसे फेस करना है। अगर हमें लाइफ शुरू करना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, क्या करना है, क्यों करना है। सो वी रियली नीड टू नो अबाउट दिस लाइफ, हाउ टू लिव, हाउ टू बी बॉर्न, हाउ टू लिव, हाउ टू कनेक्ट टू ईच अदर, कैसे एक दूसरों से कनेक्ट करना है, प्यार से कैसे जीना है, एक मैत्री भाव से कैसे जीना है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, हाउ टू कनेक्ट टू द एनिमल्स, because they are our family, extended family, and how to live with the nature. So I think this is the need of the hour. Yes. And also the art of dying, how to Yes. die graciously, how to vacate the body, because the death is so prevalent, is bound to happen for everyone, but one need to take the death as something very natural experience. And we need to also have a beautiful understanding about the phenomena of death. So that's also what Quantum Life University is bringing, that wisdom of the art of dying and the science of dying, the science of birthing, how to give birth to children in a most natural way, and how to live our life graciously. The sacred relationships Dr. Yes, Lakshmi was yes. talking about, how relationships are so vital and important, because we learn from each other. Our soul decides to come into a particular family system, family tree, and we meet people because we also offer mutual lessons. We learn from each other. So all relationships can be very, very beautiful and thriving, not like creating a hellish experience. It can be very, very like a heavenly experiences. तो इस दुनिया में कैसे आना है, कैसे जीना है, कैसे कैसे जाना जाना है, सब कुछ जाने के बाद क्या होता है, क्या करना है, वो सब कुछ जाने के बाद और आने के पहले, आने के पहले। उसके बीच में भी क्या होता है। वाह। Yes, and you can imagine just two very normal individuals. We had a dream, एक सपना था, और अब जब हम पीछे देखते हैं कैसे हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर सके बिना एक, without even 1 rupee in our pockets. It was just pure intention. How when you have that pure intention, and जब हम हमारे अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि सबको ये जो ज्ञान है मिलना चाहिए, तो द होल यूनिवर्स, सारा विश्व हमारे साथ देती है। एंड वी आर जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, हाउ हम जो भी हम ड्रीम करते हैं, हाउ वी कैन मैनिफेस्ट दैट। वाह, जो आप स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना, इट्स देयर इज सो मच हार्ड वर्क, देयर इज सो मच इंटेंशन, देयर इज सो मच ग्रुप कॉन्शियसनेस, यस, सब कुछ। Correct. And there is no better place than Bharat Desh, because Bharat Desh is the Vishwaguru. It's the world teacher actually, and only this is the land where all the ancient wisdom, eternal wisdom, always there, and this is the land where all countries around the globe, they look towards India, Bharat Desh, to receive this wisdom, to be inspired by Bharat Desh. So that's why this is so important, that whatever that happened in the ancient times, Nalanda, Takshashila, so many universities, it's the need of the hour. We need not just normal universities like regular universities, but we also need spiritual science university. So यस, और ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से फिर हमारा जो भारत देश है, उसको, भारत माता को वो जो पुनर्वैभव था, उस पुनर्वैभव मिलना चाहिए।
और ये जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है, एक क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी एक प्रकाश बनकर सारी दुनिया को प्रकाश दिखाना, यही हमारा ध्येय है, मकसद है। वंडरफुल। और जब मैंने सुना है कि पत्रीजी हमेशा एक यूनिवर्सिटी, एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी हमेशा क्रिएट करना चाहते थे, और जब आपने जब ये क्रिएट किया, उनका क्या बोलना था, उन्होंने क्या कहा? Yeah, Patriji always. इतने बार सर आए हैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी। Correct. Yeah, and Patriji's always we could see the sparkle in his eyes when he used to come to Quantum Life University campus, and always used to feel like this was my dream. I feel so happy that it is getting completely manifested, each and every bit. And he want to see that even people doing PhDs, doctorates, because he used to tell that lot of research is needed in spirituality, in meditation, astral travel, third eye, Kundalini Shakti, all departments. So he used to talk about spiritual science and research and PhDs. Many people need to do PhDs. So there are 18 schools. 18 schools of 18 wisdom. schools. 18 principles, 18 schools. of Yeah. wisdom. Yeah. 18 सब कुछ अध्याय. PSM आपने जो सीखा है, आपने इंटीग्रेट किया है to make a university out of it. That's so beautiful. Yeah, and it's QLU, Quantum Life University, is not ours. It's the dream of many masters, and it's the dream of many divine masters, and we are just instruments, divine instruments, and the whole universe is supporting the whole universe. So we are so grateful. Yes, and एक बहुत बड़ा pyramid, सहस्रारा pyramid आने जा रहा है. We are so excited because again, जब जो इंटीग्रेशन pyramid science is also a great spiritual science, तो आप वो भी आप लेकर आ रहे हैं. So we are very happy. Thank you so much. क्योंकि हम जहाँ देखते हैं this academia हमेशा उस पर एक जोर दिया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस पर नहीं दिया जाता. एंड एज योर लाइफ पर्पस यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ टू दिस, एंड आप इतने लोगों को और इंस्पायर कर रहे हैं कि वो सब, क्योंकि एक कहावत है कि आप there is no need of doctors, there is no need of engineers, there is no need of, we need more healers, we need more people who are on this path, ताकि और लोगों को इंस्पायर कर सकें. We need more conscious beings on this planet Earth. Yes. Whether you are आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या टीचर हो, we need conscious engineers, conscious doctors. So आपने उसी को मॉडिफाई कर दिया कि वही लोग अगर कॉन्शियस रहे तो. Yes, बस. Yeah. Thank you. धन्यवाद. हम फिर मिलेंगे अगले भाग में. बहुत जो आपने स्पिरिचुअल साइंस की बात की, हम और गहराई से इसको जानेंगे, क्योंकि आई थिंक ये एक एपिसोड में तो वैसे नहीं होने वाला है, बट जस्ट एज अ ग्लिम्स, एक टेस्ट, जैसे पत्रीजी बोलते हैं ना, जैसे 5 मिनट आप ध्यान करो, आपको एक टेस्ट दिलाते हैं, तो आप विद इन वन थिंग वी वुड वांट टू एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल साइंस. तो वी विल मीट यू इन द सेकेंड पार्ट. थैंक यू. कैसा लगा आपको आज का स्वानुभव? अक्सर हम अपनी माइंड की ज़्यादा सुनते हैं. आई थिंक इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप अपनी हार्ट की सुनेंगे, क्योंकि जब आप अपनी हार्ट की सुनेंगे, आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जिएंगे. जैसे डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी ने मेडिकल साइंस से स्पिरिचुअल साइंस को चुना, जो उनका पर्पस ऑफ लाइफ था. क्या आप अपनी माइंड की सुनते हैं या अपनी हार्ट की? कमेंट करके ज़रूर बताएं. हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से और गहराई से उनके स्पिरिचुअल साइंस विजडम के साथ. तब तक देखते रहिए PMC हिंदी चैनल. सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय.